तो मैं पठान केटरिंग भी खोल सकता हूँ, बाजीगर बेकरी भी खोल सकता हूँ, दिलवाले दुल्हनिया स्वीट शॉप भी खोल सकता हूँ. So I really enjoyed it. I got to spend a lot of time with my kids. और फिजिकली मैं बहुत फिट हो गया. I started working out क्योंकि कुछ और करने को नहीं था, घर में थे सब बंद. तो मैं जाके जिम में काम करता था, फिर किचन में काम करता था, फिर थोड़े से कपड़े धो देता था. घर का सब काम काज करके मैं फिजिकली फिट हो गया. एंड बट वाज ग्रेट फन बिकॉज मैंने काम करना जब शुरू किया तो एक अजीब सी हंगर और न्यूनेस था क्योंकि मैं 32 साल से काम कर रहा था. सो मुझको लगा नहीं था कि मैं कभी काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन छूटा. और फिर जब मैं वापस आया हूँ तो आई फील Let's go! messi.
So here I am with the king himself, and I'm meeting you after 4 years. And I think the last time I met you was when it was the last time I actually played for KKR and then left and moved to another team. But I'm so happy to see you. It's been a long time. No, for me also, it's been so long because unfortunately, I think after that COVID and things were happening, we couldn't get to meet each other. So I miss you a lot and your wife. And now I hear you have a new beautiful daughter, Trinity. Yes. So inshallah, next time when you're playing in Mumbai or if you come along to Mumbai, if you're not playing, then please bring her over and then I'll sit down and spend some time with the kids. Absolutely. It's actually so good to see you. इतने सालों बाद actually. और अभी ना 2 सीजन पहले, ये पिछले वाले नहीं, इससे पहले सीजन में तुम एकदम फॉर्म में आ गए थे. द रॉबिन उत्तपा भी नो, द चैंपियन उत्तपा, एंड ऐसा करके छक्के वक्के मारा था. ये हमारे अगेंस्ट ही मारा था. लेकिन फिर भी मेरे दिल से दुआई निकल रही थी. I was so happy. I remember I was sitting with Aryan and the whole family and I was so happy and I wanted to call you actually. और मैंने किया भी शायद, लेकिन लगा नहीं फोन किया. I wanted to wish you the success that you deserve. Thank you so much. Because very few people know, but he's one of the most hardworking people that I've met, not only in sports category but everywhere else. He's actually being very kind with his words, but because I know of him be a man of complete processes. I know how hard he worked for his previous film, which was 4 years ago. I remember the kind of effort that went into that film, the effort that you put in, the time that you invested in that, the energy, the injuries that you went through, and you came out of it, the mindset. How do you sustain it all? So what happens is, finally, I think in sports and in entertainment, anything that is going to be appreciated by others while they're not going to actively participate in it is based on how many people you can make happy with your performance, whether it's on the field. So, of course, you play for yourself, you play for your country, you play for your team. But at the end of it all, when you hear people getting happy who are attached to your team or attached to your film and cinema, I think that goads me on. It makes me feel, okay, I've done a couple of films which haven't done a few performances, have not gone the way we would like to. So what do you go? You go back to the drawing board and say, मुझे और कुछ आता नहीं है रॉबिन. मेरे को ऐसा लगता है कि हम काम करते हैं, अच्छा हो जाता है, फिर बुरा होता है. उसकी मुझे कोई वो नहीं मालूम, उसकी परिभाषा नहीं मालूम, उसका कोई I have no idea how to define it. If I fail, then I want to just go back and work harder. If I succeed, I'm like, oh, let's get back and work harder so we can make the next one better. So I think nothing else matters. So Pathaan, Pathaan was something, now I'm about 57, so 4 years ago, 53. And then I was feeling a little weak. Injuries were there, surgeries were there. And I said, no, I should do something that I haven't done before. And I should get physically very fit. And I told my friend, Aditya and Siddharth and the whole team, I said, एक action picture बनाओ. तो उन्होंने मुझे बोला, यार सर आप क्या कर रहे हो, ये थक जाओगे. ऐसे ट्राई तो कर लो यार. I may not be as good as Tiger and Dugu, but I'll try my best. So I've tried my best and I hope it turns out well. I'm certain it'll turn out beautifully because just seeing the trailers and the promos, and they look absolutely amazing. Thank you, Robin. And I know how hard he works. He's an extremely hardworking man. He doesn't show it to anyone. It's a lot like Roger Federer for sports people. Like everything's all behind the scenes. Nobody knows what he does. But very recently, actually a few days ago, I was talking to someone about the 2014 KKR. So it's like a walk down memory lane. And I was just, again, when you were just speaking, मुझे ये बात वहीं पे ले गया मुझे, जहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट मिला था पहले 7 मैचेस में हम सिर्फ 2 मैच जीते थे, एंड देयर वाज नो चांस ऑफ कमिंग बैक. एंड येट गौती एज अ लीडर जो बिलीव था उनमें पूरे टीम में, एंड द फैक्ट लाइक ही बैक्ड सर्टेन प्लेयर्स जैसे कि यूसुफ पठान को बैक किया था उन्होंने, एंड ही वन अस दैट मैच. एंड व्हाट अ ईयर दैट वाज फॉर अस. It was fantastic because like in life, as in sports, sports I think is a big reflection of life. कि जो आप 1-1.5 घंटे में मैच में देखते हैं, I think वो जिंदगी 40, 50, 70, 80 साल की जो जिंदगी है, उसके अंदर भी वही होता है. So some of the worst moments of your life, I think that was 2014 Abu Dhabi. I think we started. और सारे मैच हारे थे. I remember मैं बच्चों के साथ वहाँ बैठता था, फिर हम मुझे कोई इसके अंदर हिचकिचाहट नहीं कहने के अंदर कि फिर हम वहाँ पे बैठ के होटल रूम में अकेले रोते थे बच्चों की तरह. यार ये फिर से हार गए. तो बड़ा दुख हो रहा था. And then the tournament shifted to India and there was no hope for our team. But between Robin, Gautam, Yusuf Bhai, I think everybody, all the youngsters also, they all came so good. And Manish, and they all started playing so well, one after the other, and that's how life is. So I get really inspired by our KKR matches. Sometimes very depressed also, but mostly inspired. But that is sport, right? It's a series of heartbreaks and euphoria. हाँ रॉबिन, लेकिन कुछ भी कह लो, क्या होता है, दुख तो होता है यार. मतलब मैं अभी भी ज्ञान दे रहा था इससे पहले भी कि जिंदगी में ऐसा होता है, ये होता है. ज्ञान देना आसान होता है, लेकिन जब सारे हारते हैं तो अच्छा लगता नहीं है. हाँ बिल्कुल, ये तो है. पर आप 4 सालों में कोई मूवी नहीं बनाए थे आप अभी, besides के कैमियो रोल जो किए हैं आपने in certain movies, but what has the last 4 years been for you? So वो कैमियोज भी एक्चुअली आई थिंक मैंने 4 साल की ब्रेक से पहले या उसी वक्त मैं एक्चुअली 1 साल की ब्रेक ले रहा था. मैं 1 साल में रुकता हूँ, थोड़ा फिजिकली फिट होता हूँ. हमारी फिल्म थी जीरो, उसमें बहुत मेहनत थी और फिर वो चली भी नहीं, किसी को पसंद भी नहीं आई, तो मुझको थोड़ा दुख भी हुआ. बट मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ना अब वो करता हूँ जो लोगों को ज़्यादा पसंद है. मैंने दिल की बहुत कर ली. सो आई ट्राई एंड डू समथिंग व्हिच पीपल आल्सो लाइक मी डूइंग, बट डिफरेंट फॉर मी. सो मैंने 1 साल का ब्रेक लिया. फिर मेरी बेटी न्यूयॉर्क में पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि व्हेन चिल्ड्रन आर स्टडीइंग अब्रॉड, मुझको वक्त नहीं मिलता उनसे मिलने का. तो मैंने छुट्टी ले ली 1 साल. 8-9 महीने छुट्टी लेता हूँ, वो बुलाएगी तो चला जाऊँगा. कभी दुखी हुई, अकेली हुई, पढ़ाई कर रही थी अकेली जगह में, उसने बुलाया नहीं मुझे, तो मैं घर में बैठा रह गया. मैं तो बुला ही नहीं रही, शी वाज एंजॉयिंग सो मच. फिर कोविड हो गया. सो देन आई जस्ट थॉट कि मैं और कुछ क्रिएटिव काम करता हूँ, मेहनत का काम करता हूँ. तो मैंने खाना बनाना सीख लिया. अब मैं इटालियन खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ. अरे लवली. और मैंने अपना किचन बना लिया. ये बहुत बड़ी बात है शाहरुख भाई के लिए. हाँ, मैंने किचन बनाया. खाना भी नहीं खाता, मुझे बिल्कुल खाता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर मुझे टेस्टर्स चाहिए होते हैं, तो सबको खिला के ठीक है करके तो मैं खाना बना लेता हूँ. इटालियन फूड, पिज्जा बड़ा अच्छा बनाता हूँ मैं.
सो अब मेरी अगर ऐसा कभी कभी लगता है मुझको कि अगर कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ा तो मैं पठान केटरिंग भी खोल सकता हूँ, बाजीगर बेकरी भी खोल सकता हूँ, दिल वाले दुल्हनिया स्वीट शॉप भी खोल सकता हूँ. So I really enjoyed it. I got to spend a lot of time with my kids. और फिजिकली मैं बहुत फिट हो गया. आई स्टार्ट वर्किंग आउट, क्योंकि कुछ और करने को नहीं था, घर में थे सब बंद, तो मैं जाके जिम में काम करता था, फिर किचन में काम करता था, फिर थोड़े से कपड़े धो देता था. घर का सब काम काज करके मैं फिजिकली फिट हो गया. एंड बट वाज ग्रेट फन, बिकॉज मैंने काम करना जब शुरू किया तो एक अजीब सी हंगर और न्यूनेस था, क्योंकि मैं 32 साल से काम कर रहा हूँ. सो मुझको लगा नहीं था कि मैं कभी काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन छूटा. और फिर जब मैं वापस आया हूँ तो आई फील आई एम बिगर, बेटर, फास्टर, आप रिफ्रेश भी लग रहे हो एंड हैप्पियर. या यू लुक अ लॉट हैप्पियर. अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, शॉर्ट वॉट देके सब कहते हैं ओके तो ओके लगता है. पहले लगता था ओके होगा और क्या होगा. सो आई एम फीलिंग मच नाइसर नाउ. That's wonderful. I never thought I would say this to you or call you this, but Pathaan Saab, I wish you all the best. Thank you, Robinda. Wonderful. It's so good to see you. Thank you. God bless you. Cheers.